क्या इंस्पिरेशन थी ये कहानी लिखने की आपकी? आई थिंक पाकिस्तान वाज द मेन इंस्पिरेशन। मुझे लगा कि आवाम को ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ की जो एक न्यूज़ होती है, इसके अलावा जो रियल न्यूज़ होती है, अगर उसको स्क्रिप्ट में एक कमर्शियल फिल्म में लेके आया जाए, तो म्यूजिकल एंड लव स्टोरीज के अंदर ऐड की जाए, सो यू हैव अ कॉम्पैक्ट फिल्म विद ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन इट, येट इट्स नॉट इररेलेवेंट, इट्स नॉट अ फिक्शन। हमें अपनी कहानियों का खुद मुसन्निफ होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हम वेस्ट में जो स्टोरी हमारी जाती है वो कैसी है। You know, I was acting for the first time, so he said कि this is what I want the awam to know. ये बोल दो, इसमें कैसे बोलना है, that's your say. So giving that space to an actor makes a huge difference. But then there were days when he'll say यही बोलो. Absolutely. इसके लिए मुझे physical transformation बहुत करनी पड़ी. In what sense? But sir, पहले he was almost 200 pounds. Oh. Yes, I was about, yes. अभी जो exchange हुआ है ना 110 kg. फिर ऐसे हुआ फिर उसने कहा कि yeah, I think it's not LOL, it's just love. तो कहाँ से इंस्पिरेशन मिली शान आपको? I think I'm mature enough What made to you write a love decide? Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine. इस वक्त हम हैं लाहौर में। हम सोचे थे कुछ सर्दी होगी, लेकिन सर्दी भी डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन इंटरेस्टिंग और मज़े की बात यह है कि हमारे पास इस वक्त ज़रार फिल्म की कास्ट है एंड आई थिंक अभी तक रोम कॉम्स आ रही हैं, बड़ी फ़िलोसॉफिकल मूवीज़ आ रही हैं, बट अब एक मूवी आएगी जिसमें एक्शन होगा, जिसमें कुछ पेट्रियाटिक फीलिंग्स होंगी, कुछ वो वाले नारे लगेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद एंड तालियां बजेंगी। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज इट विल बी अ चेंज ऑफ फ्लेवर इन द मूवीज़ दैट वी हैव बीन वॉचिंग रिसेंटली। सो एक्साइटिंग टाइम्स फॉर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एंड हम लाहौर में थे, हमने कहा क्यों ना कास्ट के साथ मुलाकात की जाए और कुछ मालूम किया जाए कि why this movie, especially Shaan has written it and directed it himself. So I'm really curious कि what inspired him to write this movie and कुछ मज़े की एक्शन के बारे में कुछ कहानियाँ सुनते हैं, behind the scenes क्या हुआ. So let's meet the cast of Zaraar. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम, how are you? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. Very nice. Thank you so much. इस वक्त काफ़ी रात हो चुकी है, ये बेचारे इंटरव्यूज पता नहीं किस शो से आ रहे हैं और हमारे लिए इस वक्त लग नहीं रहा, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं. We must thank you because you guys flew all the way from Karachi and I think this is huge कि आपने थोड़ा सा we were late. थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ा, but I'm so sorry for that. All of us are. But thank you so much for being there. नहीं थैंक यू कि अकोमोडेट किया आपने और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म. आप लोगों के लिए भी बड़ा, एक तो इतने अरसे बाद आ रही है. हाँ जी. तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी नहीं, या थोड़ा डर भी लग रहा है? नहीं कोई डर तो नहीं इतना लग रहा, but I think we're excited to हाँ वो जो हमने जो एक स्वेटर निट की है अकेले बैठ के वो सबके सामने पहनने का मौका मिल रहा है. So I think we just want to look good and we just want to enjoy the moment. I think we've all worked very hard for it to achieve that point. We all went out of our bodies and minds and characters to make this film. So मुझे लगा कि हम इतना कुछ करने के बाद हमारी जो moment आती है, the finale, I think that's beautiful. अच्छा सॉरी मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करा. Shaan, Shahid, I don't think I know to say anything. Who doesn't know him? We have Kiran, Malik, and then we have Adnan but with us today. So my mistake. I should have done it initially. अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी आप कह रहे थे जैसे कि वो पूरी तैयारी होती है और फिर वो फाइनल जब आता है, तो जब ये फाइनल टाइम आता है, I want to ask each one of you, तो उस वक्त क्या एक्साइटमेंट बिल्कुल हाई पे चल जाती है, आप काइंड ऑफ नम हो जाते हैं? How what happens? But for me, I think I must say that everybody has their own experience. मुझे लगता है कि I enjoy that. I think it's like sharing my poetry with the people. मुझे लगता है कि जैसे कोई मुशायरा है और मुझे गज़ल पढ़नी है अपनी. So I get into that more. Yeah. No, just to make understand people, let the people understand that where do I, कहाँ से मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं किस चीज़ को समझता हूँ कि उस पर फिल्म बननी चाहिए, या उसमें कैसी मैंने पोइट्री यूज़ की है, या क्या लेंसेज यूज़ किए हैं, क्या. तो मुझे लगता है कि वो एक मुशायरा है जैसे. तो आई एम सो रिलैक्स एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट द फिल्म yesterday and Kiran I'm sure will. Yeah, likewise. I'm just excited to see the reaction of the people around me. Okay. See, I've done my job. Yeah. Now it's you guys need to tell me whether I've done it right or whether I have to. Of course, everyone has to improve. Yeah. But I am just waiting for that the reaction which I want to see when I come on the screen. So I am excited. Yeah, I think very much excited. Perhaps I think in my case I do have a bit of a nervous anxiety. ये आपकी पहली फिल्म है. It is. But then obviously he's been there, done that. 587 films. So obviously for him it's a different story altogether. Yeah. Kiran's done a lot of modeling and fantastically well as well. For me, it's the first one. So I'm excited, absolutely excited. But then at the same time there's a bit of
Yeah. anxiety there somewhere. I think थोड़ा You have- anxious होंगे आप. Yeah, you have Probably. butterflies in your stomach. Yes, I do. So are you ready to see yourself on the big screen? I am not sure. I'm ready. You have already seen yourself once. Yeah, but I am excited That's a about different it. feeling. Yes, That's it is a- different. that's feeling. such a I'm sure it different would be. feeling. मुझे तो I'm लगता sure है it would हर be. बार I mean Shaan would be able to tell us every time जब आप देखते होंगे because it's a new character एक नया experience होता है. Exactly. Get up different Ah, होता for है. him Yeah. it's a तो different वो- story. मैं तो मुझे लग रहा होता है कि first I see a film from a director's point of view, then I see it from a writer's point of view, and by the end of the day I see it with an actor's point of view. So I think that one should see the film at least 3 times to really enjoy the. It's like taking a sip of cold glass of water and then you want another one and another one. True. So the more you read, like अगर आप 15 साल पहले पढ़ी किताब दोबारा पढ़ते हैं तो आपको इस दफ़ा ज़्यादा मज़ा आता है. बिल्कुल because सही आपको कह रहे हैं आप. हाँ. एक नया पैटर्न नज़र आता है Yeah. उसमें. So मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे अपने काम का पता चलता है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, मुझे कितना करेक्ट करना है अपने आप को, कहाँ पे मुझे वर्किंग की ज़रूरत है. But overall I think it's a character that you give to the people and that character stays with the people. आप as an actor उसको perform करके उससे रिश्ता तोड़ लेते हैं because उसने यहाँ पे रहना है और आपने आगे चले जाना है. तो ये क्या इंस्पिरेशन थी ये कहानी लिखने की आपकी? पाकिस्तान, आई थिंक पाकिस्तान वाज द मेन इंस्पिरेशन. मुझे लगा कि जो जिन हालात में से हम गुजर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो या थ्रेट्स जो हैं पाकिस्तान को ओवरसीज़ जो बाहर के जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, मुझे लगता था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पाकिस्तान की डेवलपमेंट में और उसकी जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं. सो मुझे लगा कि आवाम को ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ की जो एक न्यूज़ होती है, इसके अलावा जो रियल न्यूज़ होती है, अगर उसको स्क्रिप्ट में एक कमर्शियल फिल्म में लेके आया जाए और उसको म्यूज़िकल एंड लव स्टोरीज़ के अंदर ऐड की जाए, सो यू हैव अ कॉम्पैक्ट फिल्म विद ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन इट, येट it's not irrelevant, it's not a fiction. Okay. So you actually understand the war, you don't see, you actually get to see that war. Okay, how are people manipulating in the West, for example, FATF की list में कोई पाकिस्तानी तो नहीं डलवा रहा होगा मैं. So I think all that area inspired me to write the film because I think all the films that represent Pakistan should have writers from Pakistan. हमें अपनी कहानियों का खुद मुसन्निफ होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हम वेस्ट में जो स्टोरी हमारी जाती है वो कैसी है. सो इसके बाद फिर रिसर्च आ जाती है कि आपको कहाँ पे रिसर्च करनी है, किस इश्यूज़ के बारे में करना है, बिकॉज द स्पेक्ट्रम इज सो बिग दैट यू जस्ट हैव टू पिक अप वन कंस्पिरेसी एट अ टाइम एंड देन मेक अ फिल्म ऑन दैट. तो मुझे लगा कि इस वक्त बहुत ज़रूरत है अगले 5 सालों में पाकिस्तान जियोग्राफिकली जहाँ पे लोकेटेड है और जो जियोपॉलिटिकल जो इक्विलिब्रियम चल रहा है, सिनेरियो चल रहा है, उसमें इट हैज़ अ वेरी की रोल टू प्ले. सो दैट आई वांटेड टू शो इन दिस फिल्म and threats to Pakistan, and yet wrapped up in an action-packed musical love story. Yeah. So I think I really enjoyed putting the love story in the film as a writer. You know why? Because absolutely. it gave the flavor and the aroma. Yes. Yeah. It just beautified And it's the very whole subtle. thing. And it's very subtle. It's very subtle, but it's very deep. It's very deep. And You two wouldn't two find that people who are connection. actually somebody, Completely opposite. a journalist and an agent. When they fall in love, what are the circumstances? How they do. Because How they have they two do. different Yeah. worlds. Yeah. I mean, your world was totally yeah. different than Yeah. mine. And then realizing it, yet not realizing it. Yeah. That you're in love. Slowly, gradually, you're slipping So on you know, that. as I said before as well, it built it up. Yeah. पहले affection थी, you know, then there was attraction, Yeah. and then realization. then realization, and then you said, oh, actually I'm in love. And then the part where he sees another side of you. Yeah. And there's a पहले side तो of उनको you. गलत चीजें ही नजर आ रही थी सब मतलब हम बुराइयां थोड़ा वो दिखाएंगे, थोड़ा फ्रिक्शन दिखाएंगे, Yeah. फिर कुछ so but- हम इंटरेस्ट हमारा रहेगा. Yeah. Denial. Proper denial. थोड़ी सी वो शुरू से ही नहीं एक लवी डवी स्टोरी हाँ, है, नहीं, थोड़ा नहीं, हमें नहीं। चैलेंजेस It's a very mature love what you watch. I love वैसे the वो way लग you- रहा है Yeah, कुछ it's a beautiful. very mature love. It's love which actually exists in this world. Yeah, Realistic. it's not LOL, it's just love. तो कहाँ से इंस्पिरेशन मिली शान आपको? I think I'm mature What enough made to you write a love decide? story. After writing so many love stories in my life, I think I'm mature enough to write a love story for the people who are. Which can you can No, relate to. मेरा मतलब ये था कि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आपकी जिंदगी में कुछ हुआ होता है कुछ या आपकी कोई ख्वाहिश होती है नहीं, मुझे लगा fantasy कि- या कुछ आपने पढ़ा होता है नहीं, मुझे आसपास लगा या- कि हमारे like the 40s and the 50s के जो लव अफेयर्स हैं उनमें
nahi hota love affair. They're not very verbal. They don't know how to go about it. So I think the films teach us a lot. I think it teaches the younger generation how to say I love you to the younger generation. So I think 40s and 50s need to have their own vocabulary. That's and nice. their So own ये words. love story different. Yes, you will see a very elegant, a beautiful woman in front of you, and then there's a way to Win her approach her and win her heart. She's not gonna be like वो emojis से वाला नहीं है. नहीं चलेगा. बिल्कुल नहीं. Yeah. Interesting. Impress But करना aren't you पड़ेगा. scared कि आप खो देंगे नई जनरेशन को emojis और text नहीं है और I don't think खो देंगे because जो हमारी आज की जनरेशन है वो अपनी हिस्ट्री से भी उतनी ही कनेक्टेड है जितनी हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर से. Okay. So if they're watching this, they must have watched Titanic as well or other films in Yes, that of course. category as well. Of course. So it's a spice of overall, in a nutshell, it's a spice of love that's very deep. I wouldn't say a spice, I would say a scar of love, because it leaves a mark. It leaves a mark. इतनी philosophical बातें हो रही है, इतना मजा आ रहा है. मुझे सबसे ज़्यादा interesting बात ये लग रही है. I've always been like, it's a huge honor for me to be sitting here and आपसे बात करके आप लोगों के साथ भी, but शांत. Of course. और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आपकी बातें जो हैं वो they are not superficial, and after a long time हम एक गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें एक कुछ thoughts हैं, कुछ ideas हैं, and जो चीज़ मुझे stand out कर रही है इस पूरी conversation में, और मुझे लग रहा है मूवी में भी होगा, कि आपने एक मूवी लिखी, एक कहानी लिखी नहीं है, आपके जहन में कुछ ideas हैं and you're trying कि जो भी मैं लिख रहा हूँ उसका एक मकसद हो, yet it's entertaining and it will hook the audience. So I'm मेरी expectations बहुत high हैं. So Adnan, आपकी ये पहली फिल्म है, आप थिएटर से मुंसलिक रहे हैं UK में. So पाकिस्तान में कैसे आ गए आप, ये फिल्म कैसे पकड़ा इन्होंने, कैसे ढूंढा? You're also one of the producers. I am one of the producers, but then this is his lens, which saw something perhaps, and by the way, this process was not very simple, straightforward nahi tha. Shahid, which is one of the producers as well, and he put me through. And that recommendation has gone to Shaan. Okay. And then the process was very hectic. आपने auditions दिए? Oh, absolutely. Oh wow, okay. 100%. When it comes to profession, he doesn't take things like. तो उन्होंने कहा producer हो नहीं हो, auditions देने पड़ेंगे तुम्हें? Absolutely not. Absolutely not. I think they put me on the spot, and then obviously he went through the entire process of almost 2 weeks. Not only me from my character, which is Mahavir Singh Rajput, but there were other people who auditioned for that particular character. And then obviously he took 2 weeks with multiple workshops and the auditions, and then he decided that he was coming from Bangkok, I remember, Chief. You went there for that Commercial, I think? No. Yeah. Then he was coming back from Bangkok, and then I was landing from UK, and then he said to me that you come and see me. मुझे बैंकॉक भेज दिया. आप कहीं और से आ रहे थे. देखिए अब ये भी कहानी लिख रहे हैं, उसको दे Never trust a villain. वो भी पाकिस्तानी UK वाला. हाँ ना UK. Yeah. So obviously then he said to me, you have been shortlisted, and good news is I'm going to share that with you, so you come and see me. And then I went, and obviously it's a blessing, like you said, it's an honor for you to sit and interview me. It's been my honor, I'm sure it's Kiran's honor as well, because we've been huge fan of Shaan for so long, and to work under him, with him, alongside him, I think has been the tremendous experience. It's like a PhD in 4 years. And I've learned only probably 1% of it, but this observation, and he's never shy of teaching you. This is the best thing about him, that he will tell you all what you want to learn. It's like a cricket coach. I'm there to not teach him how to play cricket. I'm just telling him what not to do or what to do. That's about it. Absolutely. The rest is his game. I'm just gonna, just edge it up a little bit. And that's why when I write also, I have dummy dialogues that go in the script, and then I have set dialogues. Oh yes. Tell me about it. Oh, it. absolutely. Wow. He will put you on the spot. See, because then I actually get a character. So sometimes you have this imaginary person, and you're writing for them, and you don't know their energy, and you don't know what's good for them, and because every person adapts the best of them. And the best way to look at them or understand them is just to look at them. True. And then get that data and then transfer that data into your script. So I work the other way around. For me, there are people who actually have mastered their art in their own character in 30 years or 40 years. So I can give them a crash course in acting and start tell him to be an alligator. That's a different story altogether. But getting the right words in his mouth, or
what would suit his body and what would suit his aura, or what would add to his fear, or what would add to her beauty. Just whatever she has, I'm just supposed to give them my line of whatever the film is, and yet all the practice is their own. So but he gave us a lot of space in acting. Like, I was acting for the first time, so he said कि this is what I want the awam to know. ये बोल दो, इसमें कैसे बोलना है. Okay. That's Yeah. your say. ये आपका- So giving that space to an actor makes a huge difference. And But he then should- there were days when he'll say यही बोलो. Absolutely. This is what I was going to say. खबरदार. This is what I was going to say. He's got two, he Two has different- sides. Absolutely. अब आप Yeah. लोग सोच रहे हो There's कि a आज one set पे side- कौन सी वाली side आएगी? There is one side which Kiran just mentioned. There's another side where he will actually throw you physically in a ditch. ये वो जरूरी है ना, And because then he will let you crawl With back up. ज़्यादा then you हर get too comfortable. हर कुर्बानी के लिए बकरे को पहले प्यार से पालना पड़ता है। And then ये तो मुझे ना ज़रार Oh की my feel God. आ रही है ज़रार की। Feel आ रही है ना? Feel आ रही है। He will take you to there. अच्छा किरण, मुझे बताएं, आजकल ये बहुत कॉन्वर्सेशन होती है जब भी हमारे यहाँ, वैसे भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में ड्रामे आर वुमेन बेस्ड एंड फिल्म्स आर मेन बेस्ड, ठीक है. और जो फिल्म्स होती हैं उसमें मेन कैरेक्टर मर्द के गिर्द ही घूम रहा होता है, तो हर बार वो जब हीरोइन का रोल आता है, कोई भी एक्ट्रेस हो, तो ये होता है आपका रोल कितना है, क्यों लिया है, आर यू जस्ट देयर टू बी अ प्रिटी फेस. सो माई क्वेश्चन इज़ फॉर यू कि इधर हम आपके कैरेक्टर जो जर्नलिस्ट है उसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट देखेंगे और उसका कितना एक आर्क है या नहीं है. How do you feel about it? See, I'll just correct one thing. ये जो आपने कहा ना कि actresses sadly पाकिस्तान में मुझे लगता है कि हमें इतना freedom नहीं है. Okay. And men take the lead. But I guess there are other places where women are leading the way. I hope we can change that. That's my perspective. And as far as my character is involved in the film, it's a very strong role. किसी ने मुझे कहा कि सिर्फ शान दिखेंगे, मैंने कहा शान भी दिखेंगे और हम सब भी दिखेंगे. हर एक्टर हैज़ द स्पेस. My character is very strong because the whole script is around that whole. Again, it's not just that I'm just sitting there looking pretty, and he made sure that my presence is seen with dialogues, with action, with love. No, that too. And I personally feel that it's not a wall that you're acting against. I think every chessboard needs a lot of, characters. So a film is not about a man or a female, male or a female. I think it's about the characters that you build and cut down to. मुझे लगा कि journalism is a very strong field. Yeah, it's the new satoon of the riyasat, and it's the bridge between the people and the power, and they are opinion makers, and whatever you see right now in Pakistani politics, it's mainly 80% because of the different political opinions that we have right now of all the people. So I thought that this is the most important role. If I wasn't doing this role, I would be doing this role. Okay. So I think this is the most important role, where she portrays a journey of a journalist, where what problems they have, and good and bad is everywhere. So what's bad is there, we show it, and then how that bad becomes good, we show that too. In journalism. Yeah. Oh, So that's interesting. I think it's a whole layer of the character that she had to do, and not just one, because it's multi-layered. The character is multi-layered. I mean, she's a daughter, she's a person who's hurting, then she's a little girl that nobody can see, who's scared and who's made a decision out of a fear of whatever. You'll see the film. But I personally feel that there were so many layers to the character that for an actor who's working for the first time was very difficult. Yet she actually got the taste of it, the hunger for it and the thirst for it, and then she went on her own quest to find out all these answers, and I as a director felt great. Kiran, कैसा था acting in front of Nadeem Bey? Oh, and then Shaan, imagine कितना दिल the धड़का, tension पहला and scene जब हुआ तो क्या हालत थी? We were pampering. Beksa was pampering Kiran like anything. बता कोई बात नहीं अब थी. She's like fine. But the thing is कि हमारे लिए ज़्यादा ये होता है कि हमसे कोई गलत बात ना सीख ले बच्चा, या कोई train जो कर रहा होता है. So Beksa was more careful, and so was I. But her freedom was the energy we needed.
So I think after seeing her on set, we felt free. You know, कि चलो ये she's owning up her own thing. आपको No, कितना it was a great experience. It was great experience. हाँ, first day of the set, I'm sure. being with Shaan and the first scene I did with him. और शान तो ऐसे कर लेते हैं ना, like literally. अच्छा और मजे की बात ये ऊपर अगर सीन यहाँ तक है ना तो शान ने ऊपर कोट पहन के और नीचे जीन पहनी and I am whole dressed up. How do you do that? Because he's directing as well, right? Oh my God. So he's doing like 3-4 roles. I was like, dude, and then there's more stress now. And he's एक so director, एक actor, ऊपर से शान शाहिद. Yes. I was like, but I think the first day I realized that if I have to, अगर मैं डर के साथ जाऊंगी तो मैं काम नहीं कर सकूंगी. मेरे में कुछ दिखा तो मुझे यहाँ रखा. बिल्कुल. तो मैं अपना काम करती हूँ और उनको अपना काम करने देती हूँ. And that's एक्शन है what I आपके did. कैरेक्टर का? हाँ. ट्रेनिंग हुई, कोई चोट लगी? Training, मैंने सुना चोटे, है bruises और मैनिक्योर पेडिक्योर तो मैं 6 महीने में Can I भूल ही share गई this? कराना. I think I got a call from my mother also. Yeah. I had bruises. And she said, बेटा ये क्या हो रहा है? अम्मी की कॉल आ रही है. मैंने कहा जी टॉर्चर हुआ है सुनो. So नैयर साहब के नैयर साथ साहब. सीन था. Oh, शान ने yes. जाके कहा, Oh, शान yes. ने कहा बच्ची जरा कमजोर सी हाँ, है, जरा मैंने ध्यान कहा, नाल, नैयर साहब, हाँ. बिल्कुल ऐसे ध्यान नाल वो इतने करना. बड़े उनके वो उन्होंने हाथ. कहीं मुझे जोर का you know वो तो फिर मुझे जाके लगी, फिर वो कह रहे सॉरी. मैंने कहा no, of course it's not your fault. But yeah, but that's again a journey, right? It's nice when you have actual bruises. It looks raw. It looks right. और रिएक्शन भी Job उतना ही search. जेन्युइन आता है Exactly, आपका. exactly. जैसे मेरा एक रोने का सीन है, वो वो you know तो Vicks, हाँ natural वो था. Vicks सब. beautiful. But then he said, I do not want you to That's do all beautiful, this. by the way. Take your time. Yeah, the camera is rolling. You're there. It's your moment. And it took a long, like it took a while. It was a But then long- it happened. Kiran, do you know that one scene is the connection you have with the audience? उससे पहले तक तुम्हें वो ये कहेंगे कि यार ये क्या वो क्या, but once you do that scene, they get a window in your life and they see that scared little girl, and I think that is where the audience connects to you Yes. and starts Perhaps, coming with yes. you. I think that's the most lovely scene that I love in the film. अदनान, आपका कैरेक्टर नेगेटिव है, विलन है. Yes. तो कैसे डिफरेंट है? थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट डाला है, क्या किया है, या हम वो एक रेगुलर विलन की स्टोरी ही देखेंगे? बिकॉज यूजली होता ही है कि वो हीरो हीरोइन में तो फिर भी हमें चेंज नजर आ जाता है. हम लोग सैडली आई फील कि हम जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं उसमें हम ज़्यादा एफर्ट नहीं डालते हैं. तो अब शान को हम थोड़ा सा यहाँ रख के आपसे बात करते हैं. आपको कैसे लगा आपका रोल? और डिड यू ट्राई टू हैव अ कन्वर्सेशन विद हिम एंड कुछ खुद से किया या क्या? नो, इसमें आई थिंक ये कैरेक्टर बड़ा वेल डिफाइंड कैरेक्टर है. इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की गई थी और ये एक्चुअली कैरेक्टर वैसे भी एग्जिस्ट करता है. देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो बुराई है ना, जो वो उसके अंदर कलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बड़ी मल्टी लेयर्ड होती है वो. और इस कैरेक्टर का जो पहनावा था, जो मैंने पहना है इसको, मुझे लगा ऐसा कि इसके लिए एक्सप्रेशन, चूँकि इन्होंने कहा था कि ये एक्सप्रेसिव कैरेक्टर है, इसमें आंखें बोलेंगी ज़्यादा, शायद ज़ुबान मत बोले. ठीक है. तो अगर ज़ुबान नहीं बोलेगी तो फिर More of an action guy than words. Okay. So he's So he's there to get the job done. And perhaps I guess उसके अंदर सबसे बड़ी important जो चीज़ थी कि इसके लिए मुझे physical transformation बहुत करनी पड़ी. In what sense? एक तो मैं आपके बाल देख रही हूँ, which is very fascinating. But ये भी he was almost 200 pounds. Yes, I was not. Yes. अभी जो exchange हुआ है ना, 110 kg. फिर ऐसे हुआ, फिर उसने कहा कि yeah, I think you're right. Almost realization. 110. हाँ. फिर? He's right. 110, yeah, and then he 110 kg. transformed So himself. he Then- did, then- and he did an then I had insane to- job. Well, obviously, if somebody like him will tell you to do something, and he's there and he's witnessed Yeah. that. When he says something, I was so on it, Kiran. Yeah. In fact, in Istanbul, you Yeah, left, yeah. and we had a car chase sequence. And he was sitting in the jeep. He had done his stunts, and he said to me, "Adnan, जाके ना तुमने ना वो shot दे के आना है." तो let me just take a coffee. तो मैं जाके मेरी गाड़ी को head-on collision कर दी थी. गाड़ी मार दी थी. Because I said that you told me to do that. So I think the तो reason. आपका मतलब यही था, ये इन्होंने मार दी, फिर आपने नहीं, कहा मेरा ये था You listen to him. हाँ. I listened to him because I think he's there so specific. He's somebody who's very brutal when it comes to filmmaking. Yes, by the way, I am. and I must tell you this: he would not very take anything. I love what I do. I think yes, he will give you a lot of Freedom comfort, your hate. but at the same time, characterization, specific चीजें जो करनी है, and I would keep the cards very close to his chest. Yes. That's one of the things I must say about Yeah. Chief. He will not disclose what aces he is holding here. But then he will tell you at the last minute, and I think it worked for me, and I'm sure it did work for Yeah. you as well.
because it just brought us canvas black है ना तो so आपने rather जो blank है so canvas blank है तो इन्होंने colors fill करने हैं तो I think this is his way and you know लाइट कैसे लेनी है शोल्डर्स का रखना आई डिडंट नो दीस थिंग्स आई मीन थिएटर में ये नहीं होता सिर्फ आवाज का आपका ग्राम होता है कि बोलना है आपने तो पिछला जो बॉडी वो भी लैंग्वेज सुन है सके तो आई थिंक इट वाज इंटरेस्टिंग बाय द वे विलन को ही मैं मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान के ऑब्वियसली लाइक किरण सेड कि नो फीमेल प्रोटैगनिस्ट की बहुत ज़्यादा कमी होती है यहाँ पे सिमिलरली आई थिंक द विलन हैज़ टू बी बिग इफ विलन इज बिग अगर बुराई होएगी तो अच्छाई बनती है हीरो भी ज्यादा मजे का एक्शन Exactly, लगता है अगर otherwise तो विलन ही अच्छाई जो ऐसा है, होता है कमजोर सा तो हीरो नहीं लगता goodness है you know। doesn't prevail. नहीं मैं तो दुआ ये करता हूँ बुरे आदमी रहने चाहिए मतलब वैसे तुम्हारी बातें बड़ी ट्विस्ट हो जाती हैं फिल इन द ब्लैंक्स मत छोड़ना मैं बोर वैसे मैं उस Please. मैं वैसे बोर हो गई उस रिएक्शन अब लाइक यार कोई और नई चीज रिपोर्ट कर लो हाँ। यार कि मुझे रट गया है जुमले कितनी लाइंस हैं कितने हाँ। वर्ड सीरियसली ओके वैसे आपके बाल मुझे बहुत फैसिनेट Thank कर you so कितना much. टाइम हमें भी सुबह से बड़े बड़े पसंद आ रहे हैं पसंद है अच्छा ये नया स्टाइल है इससे पहले different अभी नहीं, ऐसे- जिसने ऐसे। बाल बनाए उसकी सारी उंगलियां ऐसे हो गई और जेल के कितने डब्बे लगे आई वांट टू नो दैट Yes, नहीं, मेरे एक्चुअली ऐसे बाल बैठा हुआ बहुत थिक है क्या हुआ ये बच्चों के बाल बनाए मैं सोचूं आप लोगों को सेट पे कितना मजा आता होगा ये तो आप कुछ Tell me about it. We had so much fun. Yeah, yeah. All the, he's the kind of leader when it comes because he says things honestly which is out of ordinary. I don't know where he gets those things and he तो just ये makes you laugh. That's all. he likes to मुझे अच्छी बात ये लगी कि अपने आप को ये वैरायटी देते रहते हैं अपने अंदर कभी दाढ़ी बढ़ा ली कभी गायब कर दी कभी बाल ऐसे कर लिए so I think this is his way of showing his different characters that he can has the potential because it is very important for the director to feel inspired by a look the way a person looks and sometimes you know writing a script is not pen paper and आज मैं कहानी लिखूंगा anything can inspire you any event can inspire sometimes we make the end of the film before we even start the film so it is that feeling it is that smoke that just colors they just evolve into each other and then they start becoming a story or a character so ये बड़ा अच्छा करते हैं जो व्हाट्सएप कभी अफ्रीका हेयर कट कभी इधर वाला इधर मैं सोच रहा हूँ मैं actually logs लगवा लूँ यहाँ पे extension. नहीं वो अच्छा है What do you think about it? Yeah, go for it. African Kiran is Jamaican. not sure Kiran's like Go for it. Why not? Just gives you a bit of an essence. So the film looks like उसमें एक्शन भी है उसमें कार चेज भी है और उसमें एक दो मैंने सीन्स देखे जो ऊपर से जो कराची के नहीं है ऑफ कोर्स इट लुक्स लाइक सम इंटरनेशनल yeah Turkey या सो लोकेशंस डिफरेंट हैं आई हैव टू क्वेश्चंस इन माय माइंड जो मैं सही तरह वर्ड नहीं कर पा रही हूँ मुझे लगता है कि एक तरफ हम खुशी महसूस करते हैं जब हम इस तरह हम कहते हैं ओह वाओ ये तो बिल्कुल हॉलीवुड फिल्म की फील आ रही है वाओ बट फिर मैं सोचती हूँ कि इज़ इट फेयर व्हाट डू यू थिंक कि हम लोग अपनी मूवीज़ के स्टैंडर्ड को हॉलीवुड से करते हैं हम हमारी अपनी डेफिनेशन क्यों नहीं हो सकती एक्शन की या फील प्रोडक्शन क्वालिटी सिनेमाटोग्राफी की आज अगर आप पाकिस्तान में जमहूरियत की बात भी करते हैं तो वो भी हमें वैसे ही मिली है जमहूरियत से लेके डेमोक्रेसी से लेके एजुकेशन सिस्टम से लेके लॉ लेके इट इज़ ऑल इम्पोर्टेड वी हैवंट होम ग्रोन एनी लॉ वी हैवंट होम ग्रोन एनी so democracy for that matter so I think getting inspired by people who have evolved before you have I think it gives you a lot of it gives you a yardstick or a standard probably where you have to reach one day I think the US or the Western countries have evolved into filmmaking so much there are different genres and they're just blooming with films so it's not a problem when we try to be like that or we try to bring our standards up to their level because West is a big market and whatever sells is commercial cinema so आपके लिए चैलेंज था या आपके जहन में था कि मैं ये सब करूं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे या फील लेकिन मैं पाकिस्तानी टच भी एक फील भी रखूं उसमें या यू वर क्लियर नहीं ये नहीं करने की ज़रूरत स्टोरी इटसेल्फ इज़ पाकिस्तानी इज़ देसी लोकल सो I just need to focus on making sure कि इसका standard of production or quality of production is as good as Hollywood. See, that too, and I think the selection of the script matters a lot because it defines your aesthetics, it defines your what you have to do in a film, how you want to shoot a film, which characters do you need in a film. So I think that area when you're designing that area, it's like grocery shopping. Once you pick up
meat, then you have to cook a kadahi, right? So it is when you're picking up different fruits or whatever you want to, so that actually shows what kind of script you want. तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक तो westernized भी नहीं है, it's a very good fusion, it's a fusion of Pakistan, yet represented in an aesthetic that is very western. Okay. Do you feel कि आप सब भी मुझे जवाब दे सकते हैं, किरण आप और ना, कि हमारी फिल्म जो हैं, आई फील वी आर रियली ट्राइंग, लेकिन हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो रह जाता है कुछ ना कुछ, ऑलमोस्ट हर फिल्म में कुछ ना कुछ. क्या फोकस ग्रुप्स रिसर्च बिफोर इट गोज ऑन द स्क्रीन, बिग स्क्रीन, उसकी कोई वैल्यू आपको लगती है वो होना चाहिए? देखिए बिल्कुल होना चाहिए. द फोकस ग्रुप्स आर गुड फॉर द एवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशन जहाँ पे आ चुका है सिनेमा में, उनको वो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. हम लोग असल में अभी तक हलकों में, ग्रुपों में, बरादरियों में बटे हुए हैं, सूबों में बटे हुए हैं. तो हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग अपनी चॉइस पे करते हैं कि मेरे फेवरेट ये हीरो है, मेरा फेवरेट वो डायरेक्टर है, मेरी फेवरेट ये हीरोइन है, मेरी ये टीम है. उससे होता ये है कि आप जब वो एलिमेंट लेके आते हैं तो आपकी अच्छी कहानी में एक दो बुरे एलिमेंट्स आ जाते हैं, बिकॉज आप उसकी कहानी की नहीं सुन रहे होते, आप अपनी सुन रहे होते हैं. आपको ये लग रहा होता है कि ये ठीक है तो ऐसे ठीक होगा, बट कहानी भी कुछ कह रही होती है. नंबर 1. नंबर 2, जितने नए डायरेक्टर हैं उनको प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ काम करना चाहिए ताकि वो उनकी कहानी को बेहतरीन कर सकें. और जितने यंग लोग भी जो हैं उनका भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन यंग एक्टर को लेने के लिए यू रियली हैव टू बी अ गुड डायरेक्टर. यू कांट जस्ट गेट अ हॉर्स दैट यू कांट टेम एंड देन पुट इन ऑन अ फिल्म. You need to have a good director behind the camera where he can take out what he needs from the young actor. लेकिन जब वीक डायरेक्टर होता है उसको एक एक्टर इतना बड़ा चाहिए होता है जो अपना काम पूरा कर सके, परफॉर्म. तो मुझे लगता है ये सारे एलिमेंट्स जो है ना अभी तक मिसिंग चल रहे हैं. कुछ लोग टेलीविजन से आए हैं, वो टेलीविजन की टीम के साथ काम करते हैं, वो लगता है कि वो एक बिगर वर्जन है टेलीविजन ड्रामे का. कुछ लोग कमर्शियल से आते हैं, वो कमर्शियल्स की तरह का एक वो फील देते हैं और वो दे अगेन रिलाई ऑन एक्टर्स हु आर फ्रॉम द कमर्शियल एरिया. तो मुझे लगा कि हम जब जैसे आप मौला जट का देख लें तो यू पिक अप वन प्रोफेशनल स्क्रिप्ट जो पहले बन चुकी है फिल्म और रीमेक हुई है, और फिर आपने राइटर भी वही लिया. सो यू पिक्ड अप 2 एलिमेंट्स एंड यू combine them with the evolution of action films और genre films. तो आपको एक नया वो लगता है. हमारे यहाँ हम वो सेट पैटर्न पे काम करते हैं, वो अभी वो एक ही फिल्म की कंटिन्यूएशन लगती है कि जैसे 4 फिल्में एक ही बंदे की हैं, 4 हीरो हैं, तो वो because the director is not telling the young artist to change his character in all 4 films he look the same. So ये हमारे थोड़े एलिमेंट्स ख़राब हो जाते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग पे. हमारे ईगोज बहुत बड़े हैं, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते, हम एक दूसरे की काम को रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते. इफ़ यू हैव वर्कड on a thesis, I must respect it because you know you've gained more knowledge than I have. And it is very difficult for people not to think themselves of jack of all trades. Okay, I think इसके एक दूसरा इसका what he said, I think this is absolutely right. You're absolutely right, Parag, on that. I think there's another aspect to your question is that perhaps you know everything the thing which you're relating to, the cinema which you're relating to, we have a very less of a business environment here in Pakistan. Okay. You know, you're talking about 80 screens or so. So I guess everything has to be in comparison to that. Up Hollywood and Bollywood or you know whatever that out there is, you cannot compare that. Market is big. There is a huge market, you know. And they are practiced people from the past so many years. They've been making films since उनका बच्चा उठा लें वो एक्टर है. You know, so everybody is groomed that way. The country gives them respect that way. They give them money that way. India is known because of their face. They are the face of India, not the BJP. So you know that's how things work. Over here, we don't want to have another face of Pakistan. That it is what it is. So इसी वजह से वही बात कि अगर कभी वो जो आपका बात है कि वो एक डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं, वो कहानी से ज़्यादा अपने चीज़ों पे सोच रहे हैं. अपनी ईगोज बहुत है कि मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा, वो उसने मुझे कल सलाम नहीं किया था, परसों मुझे मिल के नहीं गया, आज के बाद ये मेरे साथ काम नहीं करेगा. तो हमारे यहाँ ये बहुत होता है कि कोई भी बात बुरी लगी तो वो उसके साथ काम ही नहीं करेंगे. तो वो काम नहीं करेंगे, वो हमें तो डैमेज कर ही रहे होते हैं, लेकिन वो अपने आप को ज़्यादा डैमेज कर रहे होते हैं. लेकिन आपकी ये बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि वो ग्रुप्स होते हैं तो वो कहानी से ज़्यादा वो उस ग्रुप को मेंटेन करने, उस ग्रुप की को
कि को मैनेज करने में देखिए हम लोग अक्सर चीजें भूल जब जाते हैं। तक आपके दरबार में फिल्म बनती रहेगी ना तो वो आपके दरबार की तरह की होगी। So, इसीलिए मैं गई थी उसमें दरबार एक से आदमी बाहर। जरूर कहना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा हाँ। शायद दरबार से कुछ बाहर के लोग लाके हम उनको दरबार का सीन दिखाएं, वो Because कुछ बोले तो शायद सुन वो के आपकी आवाम missing- इस वक्त तैयार नहीं है, बिकॉज इनको पिछले 60 साल से एंटरटेनमेंट मिली नहीं है। इनको न्यूज़ चैनल मिले हैं, मीडिया चैनल मिले हैं, इनको उसके अलावा क्या मिला है? सियासत मिली है। Political entertainment. उसके बाद दे आर नॉट रेडी टू टेल अस व्हाट टू मेक, बिकॉज दे आर नॉट इवॉल्व इनफ कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशंस हैं या वहाँ के जो क्रिटिक्स हैं या वहाँ की जो एक फिल्म हेरिटेज और कल्चर है उस सब को सामने रखते हुए वो लोग भाई बताते हैं कि इस तरह करना है। ऑडियंस को कैसे एजुकेट, कैसे मैच्योर होगी ऑडियंस? व्हाट डू यू थिंक? I बिकॉज़ think- ये आपका think पॉइंट मैंने evolution- नहीं सोचा था आज तक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। Yeah, I think the So- excess of freedom of cinema, and I think the number of films Content. that you make and educate the audience on what your genre is, या आपका क्या कलर है, किस तरह की हम फिल्म बनाएंगे। हम जब भी कोई फिल्म बनाते हैं आप उसको अच्छा कहने के लिए या किसी से कंपेयर कर देते हैं या बुरा कहने के लिए किसी से कंपेयर कर देते हैं। नो, इट हैज़ इट्स ओन गुड एंड बैड। ट्रीट दैट फिल्म इन द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस दैट यू आर। जैसा PI की फ्लाइट लेट होती है या ज़्यादा ठीक नहीं है, इस तरह ही आप थोड़ा सा उस एक्विलिब्रियम में आ जाए ना, उस सर्कल में आ जाए, उस जोन में आ जाए। So you believe कि comparing Pakistani films yeah, with any other film is to a not fair? Western film and saying कि इसमें ये नहीं था या उसमें Thor नहीं था, तो I think that doesn't make That's sense. just not going to happen. First of all, you don't have a comic book history in Pakistan. True. There's no literature as far as comic books are concerned. आज हम बड़े आराम से कहते हैं यार सुपर हीरो फिल्म होनी चाहिए। No, because एक सुपर हीरो फिल्म होने के लिए आपको 100 साल 70 साल पहले की सुपरमैन की कॉमिक छप जानी चाहिए थी। वो आपकी लाइफ में आनी शुरू होती है, आपके रोलिंग स्टोन मैगजीन आपके म्यूजिक की तरफ से आना शुरू होता है, सिर्फ एक स्टूडियो ना हो जो सारी मुल्क का म्यूजिक बना रहा हो। सो डाइवर्सिटी, हाउ मेनी what platforms are there to create So that true, diversity? so true that is. अगर आप वो नहीं करेंगे तो ये एक हिस्ट्री नहीं है हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है। उस पर आप आज बना लें, उस पर फलां पे बना लें, इवेंट पे फलां बना लें, इवेंट पे आप ह्यूमन स्टोरीज सुनाने की बताने की हमें आदत नहीं है, तो And हमें that's- उस आदत पे I डालना think we है। don't have that much finances as well. We need people Yeah. to invest in films, to give trust to people. You know, बहुत talent है हमारे पास, पर हमारे पास academies नहीं है। हम कहाँ जाएं? People like us. If अगर मैं Xanders में ना शान को मिलती, let's put it that way. I've been in the industry कहाँ for so Xanders में long. मिली थी आप हाँ. शान में? Xanders, कैसे? yes. So कहने का मतलब ये है कि I've been in the fashion industry. Yeah. You know, और वही favoritism है, but we have a lot of talent. I think we just need institutes and people to appreciate that. Absolutely. Yeah, I think the Institutes to business groom sense. us. Yeah. And then And actually we people have, to- people we have to grow stories. up. Yeah, we People have to- stories. You know, we just need people to invest in us and say, okay, you know what, you have a vision, let me put it up. Yeah. So वो अभी यही है कि you know, I guess we are, but I must say that we are growing and Yeah. things are improving. Yeah. So it's really nice to see that. तो कैसे मिली थी आपको ये कहानी बताएं? This is interesting. मैंने सोचा था वैसे मैं भूल गई। अच्छा आपने करा दिया। Well, हुआ ये कि I was auditioning in Karachi and I finished my auditions and couldn't find the person I was looking for, so I told my friend, I said, you know, let's just take a flight back and take some नहीं rest. मिल रही and- लड़की, हीरोइन नहीं मिल रही नहीं मुझे। मिल रही. So and I said fine. So I got my ticket. I said let's have lunch at Xander's. So we went to Xander's and we were sitting there and in walks Kiran Malik with just being Kiran Malik. Her flair. Her flair and she walks in and she knew the person I was there with, Hamad Chaudhary. a mutual Yeah, friend. very different of He us. said, hey Kiran, and she said, hey Hamad, and she says, come on, इधर ही आ जाओ. And और मैंने we all- साथ ही कहा, मैंने कहा यार जरा शान शाहिद के साथ एक तस्वीर ही ले दो. Actually, you were not there to meet Shaan. No, or no, Hamad. No, I was not there to even meet. I was with Achha, actually Kiran, Bilal you Ashraf. We were realize having how coffee. scary it is that if I wasn't there or if you That's didn't what come- I'm saying. Bloody कि- hell. But it was Destiny. meant to be that way ना, इसीलिए। I was with a friend of mine having coffee, and then seeing another friend who was from London, and then Shaan sitting with him. तो साथ इन्होंने कहा कि बैठ जाओ, फिर मैंने स्वयं कहा एक तस्वीर भी आ सकती है. And I still remember I have a Little did picture. you know कि मैं Exactly. हीरोइन होंगी। So, you know, Exactly. she sat and she started talking. After a while, when she was in her comfort zone, after like 2-3 minutes, so the order came and I started eating and I'm eating and then I hear this laughter, and I just look at her like this. She's so free because your laughter says a lot about you. So that energy, I said, oh okay. And then I started observing her. I'm so sorry, I was checking you out. And the way she On looked. camera, Yeah. confession. Yeah, and the way she looked and the way she used her hands and the energy she had and the way she laughed and
you know, then I said, you know, she's beautiful anyway. You need to see that. And then I just slowly slipped, you know, मैंने आराम से लगा check करूँ if she wants to be in a film. I said, आप, You called. no, but no, that time you didn't say. I just gave you a liner. I said I'm working on a script. Ha. He said, And yeah, what's the story? I said, well, it's about a journalist, and this is the journalist, and this is what she does, and this is what she is. And she was so involved in that, you know, she was listening, and then the next day I said, Hamad ko maine kaha, I think we found the girl. So can I have a number, or can I call her? And then I got her number, and I called her, and I said, would you like to do the film? And there was this moment of silence from the other side. And he was like, really? I was like, was that a yes or a no? Are you there? 9 to 5. Are you still there? Like, you know, I do a 9 to 5 job, and someone saying कि film मैंने कहा पहली बार छुट्टियाँ कहाँ से लूँगी? And then it was. Sorry, मैंने details मुझे बड़े मजे जब ये आपको कहानी सुना रहे तो उसको आपने सोचा नहीं कि मुझे ऑफर कर रहे हैं? No, not at all. She was like, you know, like. I was just listening. That's how Because she I was like, oh, there's a new You film were coming. just fangirling. You were under the aura of Yeah, okay. And the way he was telling the script, it was because the script it's so involving. I kept on listening. I was like, अच्छा. पर ये उसी character को ना ज़्यादा मैंने कहा पता नहीं बार journalist. But then again, it's Shaan, right? तो फिर जब call आई तो क्या? So I was just quiet. I said. पहले तो you didn't say मैं चुप हो गई थी. हाँ नहीं, so Hamad called and then he said कि Shaan wants to talk to you. मैंने कहा बल्ले भी बल्ले अच्छा क्या होने लगा. तो then he said कि you know I have this script which I was narrating it to you. I would like to offer you that role. And I was quiet. I was like, I've never done this before in my life, and you know I have a very different lifestyle. You know I don't live here. I work 9 to 5, so how will this whole thing will happen? He said, वो बात का काम है. आप मुझे ये बताएं, आप act करेंगी? So मैंने कहा मैं तो कभी acting ही नहीं की. उसने कहा जो कल करी थी बस वही करना. Okay. And yeah, that's how we it. like kind of. हालांकि मिलना मुझे इनको चाहिए था खाने की जगह पे. तो फिर बस सब बैठ जाते हैं खाने की जगह. अच्छा कोई इंटरेस्टिंग वाकया हुआ स्टंट्स पे शूट करते हुए something that you can share? It was I'm just telling you, we were just discussing this. I think interesting वाकया तब होता है जब बाकी वाकया बोल रहा हूँ. So it was for me it was the most fun part of my life. Wow. I think The I journey was enjoyed absolutely every moment all of it. together. It was like a party on a cruise. Yeah. You know, so it just kept on, and there was music and there was laughter. We'll have long hours, but it wouldn't feel like it. Wouldn't feel like it. Music लगा लेते थे, घर से खाना शाम मंगा लेते थे. So You know, it was रौनक. जब मुझे सेट पे रौनक वो थी. पैकअप में कहता था ना, only then I felt कि यार थक गए. Wow. Yes. And I remember one of the incidents, which is what we were at the airport, and we were shooting. He was there for 26 hours, 26 घंटे shoot. वो गोरा था हमारा जो DOP, कैमरामैन, हाँ जो कैमरामैन था. वो तो Tim तो he gone absolutely mad. He said, "What was going on?" You know, obviously, you know. I have my rights. Well, yeah. Welcome to the Desi side. Yeah. So he was busy. पढ़ भी गया था. But he has a lot of energy when he's on the set. I mean, we were not used to it. I wasn't certainly, and I had to keep up. So you know, और इस सारे में फिर आपने उस कैरेक्टर को साथ लेके चलते रहना है. वो बोझ होता है. You can't just put him away and just you know just take a hike and then come back. And so all of them, I think, no matter how much fun we had or how much we laughed, as soon as the camera was there, I think everybody went into Cried, that. laughed. Yeah, कि जी operation theatre में पहुंच जाए सारे. You know, blood and that sort of sweat. thing, you We know? gave our blood and sweat. Yes. No, I had You a actually sprained gave the ankle, blood. I had a I did. broken ankle. And a manicure and a pedicure. Yeah, and my And manicure you and had that, pedicure. yes. So मैं आती हूँ एक दिन, कोई 10 दिन का शूट हुआ और मैं एक दिन गई, मैंने बड़ा Spa day. manicure तुमने spa पहले day. कहा है. तो मैंने तुमने कहा है आते मुझे, साथ. तुमने कहा कल मुझे ऑफ दे दे, मैंने स्पा में बस Spa full on spa day. अच्छा मैं अगले दिन आती हूँ बड़ी टिप टॉप. मैंने कहा शान I look like a normal human being. Yes. अच्छा and then there's a set darkness ये वो. तो कहता है wrong day. मैंने कहा why? कहता है ये तो भी खराब हो जाएगा. मैंने कहा why? He said कि we have a torture scene है तुम्हारा. Oh God. तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मेरे so Fatma my stylist, so I was like Fatma चलो फिर makeup और वो. He said no. just lie You down. can't just lie down roll and over. roll over. On the I said dirt. no, Or Shaan. mitti. He said you have to. So I did. And then he took a picture of my pedicure and manicure, and then that picture and Put put it it on up Facebook, on Facebook. Yes. So, So there are that was times the journey. coming back to Kiran, अब उसके लिए
you know, that day was really, उसको पता ही नहीं था, surprise आ गई, ये था कि I was waiting for her with the Actually, you didn't know about the torture torture scene. No. That was Well, I knew. classic. That's Right me. after the spa scene, there is a torture. Spa day, there is a Wow. भाई स्पा डे के बाद मैं Spa day और के खुश थी मैं आ रही मैंने कहा look Yeah, he और said no wrong थे इसी तरह हम लोग जब स्टंट कर रहे थे, you asked about the stunts in Istanbul and it's -2 degrees by the way in November. It's proper cold. और चेस सीक्वेंसेस था और उसमें 2 कैमरास लगे हुए थे इनकी गाड़ी पे और 2 मेरी कार ऊपर एक ड्रोन था, फिर ऊपर आगे एक कार drone गाड़ी पे था। 4 कैमरास भी। और हम लोगों ने एक दूसरे वो चेस सीक्वेंस का पूरा सीन था तो उसमें हम लोगों ने 6 फुट का आई थिंक अबाउट 4.5-5 फीट का डिफरेंस रख के हम लोगों ने पूरा स्किट करना था तो दोनों कैमरा से वो करना इट वाज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वाज दैट Yeah, एंड द जंप वी डन फ्रॉम द 9th story building Yes, I think that they were both very dangerous. because if you're not precise about Yes. and it done by yourself right Done by and myself. done by You did ourselves stunts आप लोगों ने सब कुछ या किए हैं, मैं okay. मेरा कुछ No stunts body किए, doubles, nothing. मेरे कुछ किए हैं बॉडी Okay. डबल्स, इनका बॉडी डबल मिल नहीं रहा था। उनको खुद ही करना पड़ा okay. पूरे टर्की में हमें ये मॉडल नहीं मिला, तो हमने कहा कि फिर इसे there you go Kiran it could be your But actually nice ये story exciting लग रहा है यार मुझे बहुत एक्शन सीक्वेंस जो आप लोग डिटेल्स बता रहे हैं Did you see the what I enjoy most is that we actually found a lot of friends while we made a film. So you know, we enjoy each other's company and we laugh it off, and you know, so I think that is what matters. You shouldn't be bitter about True. finishing a film and then nobody's talking to anybody and saying उसने मुझे सलाम नहीं किया, उसने फलाना नहीं किया. So I think absolutely these छोटी छोटी चीजें one should leave it their egos home. My last question, क्या किस वजह से आपने थोड़े फॉरेन टैलेंट को यूज़ किया है जैसे डीओपी आपके यहाँ के नहीं है what was the reason you think पाकिस्तान में हम अभी हमारे पास वो facilities वो capability नहीं है or did you think about getting a person and training it in that way वो भी तो एक But फायदा I felt that there were 2 reasons. I wanted to be trained by a you foreign wanted cameraman. yourself to Yes. be oh wow okay It's not that I just You wanted a wanted to cameraman. learn, I wanted to learn what they had, and me going there getting a class done was also an option. Or rather, I get somebody and I look at what he Nahin. does and how he does it. but we chief have- is the other way around No, but Tim says something different. He Yeah. says, and he was very proud of that. He respects the chief very much. He learned a lot because Gorak ke cameraman, you know, but to the point, है ना, 12-hour shift and the lighting diagrams and so on and so forth. तो वो smart approach नहीं थी वहाँ पे. तो obviously he's got 5 and he would do things which would surprise him. And when he gets the result, and he will say, how did that happen? तो उल्टा हो गया so you know, thank you. But the point was कि एक तो पाकिस्तान के कैमरामैन बहुत अच्छे हैं लेकिन बहुत बिजी हैं. Okay. और वो कैमरामैन के साथ साथ अब वो प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन वाले भी हो गए. Yeah. तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा कैमरा डिपार्टमेंट को बड़ा करना चाहिए. बहुत कम कैमरामैन हैं, वो कमर्शियल्स भी करते हैं, वो फिल्म्स भी करते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं और वो हाथ से That is a कंट्रोल भी नहीं lot. जाने देते. तो आई थिंक दैट नीड्स टू गो अ लिटिल फॉर द इंडस्ट्री टू ग्रो. अगर किसी के पास टाइम नहीं होता तो फिर वो बाहर से ही लेके आता है. सो for me, my first thing was कि because I'm making a film on these aesthetics and on an international brand, I want a person who understands my color palette. I want a person who understands my frame, the way I see it. And so we got one of the best cameramen. Tim is a great cameraman. I loved working with him. और इस सारे process को जब हम ख़त्म किया और हम जब बैठे तो they all agreed also because this is He's the very final good, अब yes. देखो ना, मिसाल के तौर पे एक जर्नलिस्ट है हमारे यहाँ, अगर कोई जर्नलिस्ट काम कर रहा हो तो हमारा जो कैमरामैन होता है वो उसको वही लाइट देता है कि आप बहुत हसीन लग रही हैं आज, वो वाली लाइट. Sometimes you don't need that light. See, Agora would never judge you by how you look, but he'll go by the book, he'll go by the character. No matter how requirement. beautiful she is, but he still wanted her to look like a mature woman who's saying something in a talk show. So I think these small little details matter the actor a lot. With the actor, you know, they add to his character. चलिए एक बात तो पता चली all those people who are thinking किस direction में जाना है मीडिया से DOP की field is something that Yeah. you guys Great. can explore. We need new and fresh ideas. Thank you so much आप सबका time Thank का. you, Thank thank you. you so much for मजा taking आया. our time. Yes. Yeah. बड़ी अच्छी Yeah. details आप लोगों ने Good. सुनाई and we are looking forward to the film. We are looking forward to host you as well on Yes. the 25th. Inshallah. You must So come. inshallah. Yeah. We want because we feel proud when we read about Fuchsia Magazine also and Yeah, all Thank that you you do. so much. It's a Pakistani Amazing brand and work. it's all over the world, and it's an honor to be associated with Thank it. you so and much. I think, You're making our day. no, All of us, your team, that's- teacher, wait. I think Farah, Asad, you know, they're very Farah close. and Yeah. Asad, Asad is a buddy Yeah, and great yeah. time friend and a Yeah. good director. Yeah.
Farah has fond always of been so kind. मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ये जो affiliation है, designers, all these people from commercials and designers, ये हम लोग आपस में इतना हमें होना चाहिए. Because I think in a film we must come and support each other Definitely. in a very different way. So it's good to have you guys, and thank you so much for Fantastic. covering up Zaraar, and hope to see you at the premiere. Yeah. And we're looking forward to the Naras Pakistan Zindabad. हाँ, इंशाल्लाह, Clapping and इंशाल्लाह, सीटियाँ मैं तो सोचूं कि वो मजा आएगा. हाँ, चलिए जी, thank you so much for your time. Thank you. The film starts showing in the cinemas on the 25th of November, Yes. right? So do go and catch it. This Friday. Thank you. Thank you. Thank you.